वेलकम डियर फ्रेंड्स। इन द अर्लियर सेशन, इसके पहले का जो लेक्चर था, इसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक इंट्रोडक्शन ले ली है और उसके पहले हमने लोअर एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स, अ फ्यू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एनिमल्स, ये कवर कर लिया है। In our introduction to human reproduction, we listed the male structures and the female structures. Today, we will go ahead with a beginning of the discussion, detailed discussion about individual male structures. इनमें सबसे अहम, most important primary organ, also called gonads, are the pair of testes. So let's write that. The pair of testes, TES. TES is plural, so since each human individual has two testes, a pair, तो हम testes लिख रहे हैं. When you talk of any one individual, it is called as one individual gland, then it is testis, TES, TIS. So singular is TES, TIS. एक testis, a pair of testes. Now, when we talk of the testes, we should keep in mind, first of all, the location. Where are they located? Where are they situated in the body? And when we talk of the situation or the location in the body, the most important term, the most important word to remember is that these are extra-abdominal. So location, LOCATION, location is extra-abdominal. EXTRAABDOMINAL, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. इसका मीनिंग है आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन. तो एब्डोमेन में वो टेस्टिस नहीं है, एब्डोमेन के बाहर है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एब्डोमेन में, बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, देयर इज द लिवर, देयर इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, there is a lot of energy production and a lot of heat. So the temperature inside the abdomen, the core body temperature, is a little warm. And testes, for their proper functioning, which means mainly formation of the spermatozoa, sperm production, साथ ही साथ the male hormone testosterone, इसका production, ये सभी एक्टिविटी के लिए it needs a temperature slightly less than the main core body temperature. हमारा main abdominal core body temperature, it is around 37 degrees Celsius or just a little more than that. But testes need a temperature at least 2 to 3 degrees Celsius lower than this temperature. If they were to remain in the abdomen, functioning would not have been proper. तो इनका बाहर रहना जरूरी है. That is why they are located in a pouch, something like a bag. So a pouch-like structure made up of skin as well as a little bit of smooth muscles, thin layer of smooth muscles in the skin. So what we can call as a musculocutaneous sac, which we call as the scrotum. And the scrotum is located in between the two thighs in the pubic region near the groin. So for an individual, सपोज दिस इज, ये उसकी वेस्ट है और ये यहां ग्रॉइन रीजन है, यहां से आगे थाइज है एक और दूसरा. सो दिस इज हिज राइट साइड, दिस इज द पर्सन्स लेफ्ट साइड. सो दिस इज राइट थाई, दिस इज लेफ्ट थाई. इन दिस प्यूबिक रीजन, यहां पे स्क्रोटम इज लाइक अ bag like or sac like structure, and within the scrotum located, I will show that with a different color, as a paired structure. So you have over here the testes as a paired structure in the scrotum. So this is the location of the testes. Now we can clear off this. हर एक इंडिविजुअल टेस्टिस का अगर हम स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो ईच टेस्टिस इज अप्रोक्सीमेटली ओवल इन शेप.
a little vertically elongated, longitudinal. इस axis में its size is approximately 2 inches. Then in the horizontal direction, anterior posterior horizontal direction, it's about 1.5 inch approximately, and lateral thickness is approximately about 1 inch in thickness. So this way एक एग की तरह, अंडे की तरह उसका अप्रोक्सीमेट ओवल शेप है एंड साइजिंग है. दिस इज ऑफ कोर्स विद इन द स्क्रोटम. नाउ इफ यू वर टू सी द detailed structure of the testis, then what we find is it has some protective coverings, it has some layers of protective coverings. जो एब्डोमेन का पेरिटोनियम होता है, लाइनिंग ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ऑल्दो दिस इज आउटसाइड द एब्डोमेन, इसकी शुरुआत एब्डोमेन से हुई है. सो एट वन टाइम द टेस्टिस वर इनसाइड द एब्डोमेन, दे हैव कम डाउन बाय अ प्रोसेस व्हिच वी कॉल एज डिसेंट ऑफ टेस्टिस. Descent of testes we will see a little later, but because of that, because they have started from the abdomen, they have brought along with them a little bit of peritoneum covering. Abdomen को अंदर बाहर चारों तरफ से पेरिटोनियम होता है, तो टेस्टिस वहां से निकल के बाहर आ गए, तो साथ साथ पेरिटोनियम थोड़ा खींच के लाए, and so there is a little peritoneal covering from not all sides, but since it has come through it, so on some one partial covering is there, not all sides. So that partial covering which is present is referred to as the tunica vaginalis. So that is an outermost layer called tunica. Tunic means covering, so tunica vaginalis. Tunica vaginalis is a modified partial peritoneal covering, covering part of the testes. Inner to that, there is a connective tissue layer which we call as tunica albuginea. A-L-B-U-G-I-N-E-A. Tunica albuginea. This is a little thick. This is for protection purpose, and it is made up of dense connective tissue. बाद में हम देखेंगे कि इसी से कुछ प्रोजेक्शंस अंदर की तरफ भी आते हैं, एंड दे डिवाइड द टेस्टिस इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपार्टमेंट्स. सो दिस वे वी फाइंड दैट द टेस्टिस कैन बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स व्हिच वी कॉल एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. सो वी विल कम टू दिस अ लिटिल लेटर. थोड़ा सा पहले तीसरा जो लेयर है, इनसाइड ऑफ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया देयर इज अ वेरी वेरी थिन मेम्ब्रेनस and with rich blood supply, so vascular layer called as tunica vasculosa. As the name suggests, this is a little vascular. इसमें blood vessels ज़्यादा है. इस तरीके से testes के कुछ protective coverings है. इन coverings को हटाते हुए अगर हम इसमें से एक vertical section ले लेते, if you can take a slice through the testes, then what we will see, let's try to have a look at that. So let's clear this particular diagram and let's try to see what we will get to see if you take a slice, a vertical section through the testes. What we will find is tunica albuginea जो protective connective tissue का layer था, वहां से कुछ outgrowths की तरह इस तरफ आया हुआ है, some projections, because of which the testicular cavity, the testicular space has got divided into compartments. उसको छोटे छोटे sections में मान लो distribute कर दिया है. ऐसे approximately 200 से 300 compartments, small tiny compartments बनते हैं, and these we call as testicular lobules. So the testes is treated as a lobe and smaller sections of the lobe, that is why we are calling them lobules. So testicular lobules बनेंगे. अब ये मैं इस तरफ एंटीरियर दिखा रहा हूं, ये समझ लीजिए आप, which means ये सामने वाली साइड जो है वो इस तरफ है. So in other words, if a person is facing like this, then this will be the arrangement of the testicular lobules. They will be closed on this side and opening out somewhere on this side. पीछे की तरफ posterior side को open होते रहेंगे. अब testicular lobules जो है,
इनके अंदर एक्चुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, एंड दोज आर कॉल्ड एज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. एज द नेम सजेस्ट, ये ट्यूब्यूल्स है यानी कि बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स के तरह है, वेरी वेरी स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. These are actually quite long. They can be as long as 70 to 80 centimeters, but in that 1 to 1.5 inch space, इसमें उनको compress करने के लिए उसको highly coiled बनाया गया है. So highly coiled seminiferous tubules are present inside the testicular lobules. So this way you will get them as very very densely coiled. आप ये I hope समझ रहे हैं कैसा coiling इसका हो रहा है. अब इसमें एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में छोटा सा अगर है, छोटा सा लोब्यूल है, जैसे कि टुवर्ड्स द एपेक्स छोटा होगा, तो हो सकता है एक या दो ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे. टुवर्ड्स द मिडिल थोड़े बड़े हैं तो थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, 2 3 कभी 4 भी हो सकते हैं. सो इन जनरल एनीवेयर बिटवीन अबाउट 2 to 3 to 4, sometimes as little as 1, sometimes maybe even an extra 4th 5th one, ऐसे कम ज्यादा, but on an average generally about 1 to 4, typically 2 to 3 seminiferous tubules in each testicular lobule. So 200 से 300 testicular lobules है, हर एक में on an average 2 से 3 seminiferous tubules है, तो overall approximately 650-700 के आसपास, 700-750 के आसपास भी you have approximately seminiferous tubules. As the name suggests, semen which is going to contain the sperms, वो प्रोड्यूस करने वाले सेमिनिफेरस, सीमेन प्रोड्यूसिंग या सीमेन बेरिंग ट्यूब्यूल्स. सो इन अदर वर्ड्स, द स्पर्म्स व्हिच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेन, मेन एज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पर्म इज द गैमीट, फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट सबसे इंपॉर्टेंट है. सो द मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, द गैमीट, द स्पर्म, द स्पर्मेटोजोन एज द टेक्निकल वर्ड इज, इसको प्रोड्यूस करने वाले ये ट्यूब्यूल्स है. That is why they are obviously the most important structure. अब यहाँ पे तो ये हम ऐसे highly coiled दिखा रहे हैं, but इसमें से इसका structure समझना थोड़ा मुश्किल है. इसको और बेहतर समझना है तो we will need to take a very very thin microscopic section of this like this and mount it and observe it under magnification under a microscope. So अगर इस तरीके से माइक्रोस्कोप के अंडर इसको अगर हम माउंट करके देखेंगे तो एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो एरिया है वो मैग्नीफाई होके कैसे दिख सकता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो लेट्स क्लियर दिस पार्ट. Yes. Now we saw that the seminiferous tubule is highly coiled like this. आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे coiling है. इसमें से सेक्शन कट करोगे तो कहीं पे एक वो जो ट्यूब्यूल है उसका क्रॉस सेक्शन ऐसे आ सकता है, कहीं पे वो थोड़ा सा एंगल को कट हो जाएगा तो थोड़ा सा इलोंगेटेड भी दिख सकता है, एंड एकदम क्लियर शार्प कट हो गया तो फिर से एक बार ऐसा गोल भी हो सकता है. इस तरीके से अलग अलग थोड़े से शेप्स दिखेंगे, बट इसेंशियली this is a circular cross section tubule. When going across a little obliquely, you may get a little ovoid section, but essentially you expect these kind of circular cross sections. इस तरीके से circular cross sections कटे हुए हमको नजर आएंगे, और इसके बीच का जो टिश्यू है, which means ये था testicular lobule जिसके अंदर थे ये seminiferous tubules. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कॉइल्स के बीच में ये जो एरिया है, दिस एरिया इज रेफर्ड टू एज द इंटरस्टिशियम. सो आई एम शोइंग दिस, बट वी विल not really be interested in showing any shading there, so we'll try to show it with a very very thin shading. ऐसे ये जो बीच के एरिया है डॉटेड दिखा रहे हैं, यहाँ से ब्लड वेसल्स भी जारी होगी, कैपिलरीज वगैरह, and all this part is called as interstitial tissue. These are the actual seminiferous tubules. So let's label this. So this is one single section of
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बीच का ये टिश्यू है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियम। एक्चुअली द वर्ड इंटरस्टिशियम is used wherever there is an intervening tissue। बीच का टिश्यू फिलिंग अप सब्सटेंस, इसको हमेशा इंटरस्टिशियम कहते हैं, चाहे वो किडनी में हो, चाहे लंग्स में हो, चाहे टेस्टिस में हो। When in the testes we have a look at this section, we also find very important a cluster of cells once in a while, बीच बीच में कहीं पे, थोड़ा यहाँ, कहीं और थोड़ा यहाँ, ऐसे अलग अलग जगह पे छोटे छोटे ग्रुप्स, clusters of cells in the interstitium, and because they are in the interstitium they can be called as interstitial cells. So let's write that, interstitial cells. There is a specific name for these because they are named in honor of a scientist who helped to study and discover them, and so they are also called as interstitial cells of Leydig, Leydig। इसको आप लेडिग भी कह सकते हो, लेडिश भी कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आपकी मर्जी पर है। अब जो एक्चुअल सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है लाइनिंग द आउटर साइड, दिस इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सेल्स ऑल राउंड which is the actual germinal epithelium. By germinal epithelium what we mean is जिसके divisions और subdivisions से, जिसके cells के further multiplication से actually sperms बनने वाले हैं, the gametes, the germ cell in the reproduction means the cell which is going to give rise to the gametes. So इनके आगे के process से actual sperm production, so a process which we call as spermatogenesis, which we will study a little later, sperms का जन्म लेना, genesis means to be born. So how sperms will be created, how they'll be born from this germinal epithelium. And so all along the lining you have a lot of germinal epithelium cells, ऐसे चारों तरफ से सेक्शन में दिखाई देंगे। इन्हीं में बीच बीच में कहीं पे थोड़े से बड़े से slightly enlarged and somewhat pyramidal, and so to show them separately I will use a slightly different color. So a little enlarged, a little pyramid shaped, थोड़े से tapering apex and broad base वाले cells called Sertoli cells are present. So let's label this, these are Sertoli cells, Sertoli, Sertoli cells or cells of Sertoli. Sertoli is also the name of a scientist. ऐसे थोड़े और भी होंगे बीच बीच में अलग अलग जगह पे ऐसे pyramidal cells. And as the germinal epithelium cells which are along this lining, as they undergo multiplication, divisions, mitosis, they will give rise to smaller and smaller cells which will then keep on maturing through the different stages of sperm development, such as spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, and eventually finally spermatozoa. But ये detailed steps हर एक का क्या significance है, क्या importance है, spermatogenesis process में हम अलग से देखेंगे। इस तरीके से ये अलग अलग stages यहाँ पे progressively as you go towards the center नजर आना शुरू हो जाएगा। I'm not going to spend time drawing on all over, but आप समझ लीजिए कि ये चारों तरफ से ऐसे है। Finally जो कुछ final sperms बनते हैं, and sperms you know human sperms have flagella, they are motile like this, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कुछ इसके apex पे बैठे हुए, sitting there attached, trying to get some nourishment, ऐसे कुछ final ready spermatozoa भी नजर आ सकते हैं। बीच में कैविटी जो है, hollow space, the lumen, ये empty है, इसमें से धीरे धीरे ये रिलीज होके आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स माइग्रेट होते 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 फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड आएंगे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा इनका। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटलेट्स दे आर टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड। इसके आगे क्या स्ट्रक्चर्स है
वो हम एक्सेसरी डक्ट सिस्टम में देखेंगे, क्योंकि यहां से बाहर निकलने के बाद उनका पैसेज वे क्या है, उनका पाथवे क्या है, दैट विल बी कॉल्ड द डक्ट सिस्टम. So that includes some structures called reti testes and vasa efferentia and some more parts. उसको हम आगे के किसी क्लास में देखेंगे. आज हम टेस्टिस पे फोकस कर रहे हैं. सो इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेक्शन में हमें ये अलग अलग जर्मिनल एपिथेलियम और different stages of sperm development, all those will be visible. Cells of Sertoli will be visible. In between the different seminiferous tubules, you will find interstitium tissue, inside which there is interstitial cells of Leydig. Interstitial cells of Leydig का importance ये है कि ये testosterone produce करते हैं, and testosterone is the male hormone. So this is an endocrine secretion. So यहाँ से अगल बगल से जाने वाली capillaries में से इनका direct release of hormone हो जाएगा. There is no gland, there is no duct system for this. These are ductless endocrine structure है. So यहाँ से testosterone production हो जाएगा. This way testis is partly endocrine also, and there is of course the duct system and so on to take the sperms. So exocrine part भी है इसमें. In that sense you can talk of the testis as a mixed gland. ये हो गया हमारा टेस्टिस का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने लेयर्स डिस्कस किए, प्रोटेक्टिव लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, पार्ट ऑफ पेरिटोनियम, ट्यूनिका वैजिनालिस, एंड टेस्टिस के खुद के अपने ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वैस्कुलोसा. Within that we said the space of the testes, the oval space, is divided into sections called testicular lobules, about 2 to 300. Within each of these we said there are about 1, 2, 3, 4, 5 के आसपास, depending upon the size, highly coiled structures, very very fine tubular structures called seminiferous tubules. Seminiferous tubules are the region where the actual sperm production is going to take place. On a microscopic section, a section of the seminiferous tubule shows germinal epithelium, various stages of sperm development, Sertoli cells for nutrition and final development of the sperms, a few sperms anchored there, and some sperms released in the hollow lumen cavity in the center being transported. In between a few sections of the seminiferous tubules is interstitial tissue with interstitial cells of Leydig, which are producing the testosterone. You can also keep in mind that male hormone from the pituitary called LH, also called ICSH, interstitial cell stimulating hormone, वो यहाँ पे आके act कर रहा है. That is stimulating these cells to produce testosterone. So this is about the microscopic structure of the testes. With this we can conclude, we can stop our discussion of the detailed structure of the testes. इसके आगे duct system का कुछ हिस्सा testes के साथ जुड़ा हुआ है, such as reti testes and so on. But because that is the passageway of the sperms, that is a part of the duct system, we will treat that in a separate session. यहाँ पे हम इस session को conclude करते हैं, इसको हम stop कर देते हैं. So here we will conclude our discussion about the detailed structure of testes. Thank you for listening to this discussion, and please learn this. It is easy to learn this on a regular basis. Regular पढ़ाई करते रहो तो आगे याद रखना आसान रह जाता है. Thank you all once again. Goodbye. जय हिंद.